Hello everyone, I am Dr. Richa Upadhyay, Assistant Professor in the Department of Botany, Mihir Bose, PG College, GB Nagar. Today I will describe about the plasma membranes. The plasma membranes is the outermost boundary of the cell. It separates the protoplasm from the external environment. And as you know, in the animal cell there is no cell wall, so plasma membranes is the outermost boundary of the cell. But in the plant cell, the plasma membranes is surrounded by a cell wall. The plasma membranes is or cell membranes is also known as a plasma lemma, and this term plasma lemma was used by J.Q. Flower, and the term cell membranes was first time used by the C. Nageli and C. Kramer in 1855. The plasma membranes is a selectively permeable membrane. Selectively permeable means it allows only certain substances to go inside or outside of the cell. That I will describe in detail what is the reason behind this selective permeability. Now the chemical composition of the membranes. What are the parts or what are the constituents of membranes? The membranes is mainly composed of lipid, protein, and carbohydrate, but its percentage normally varies among different membranes and as per requirement. The lipid are mostly three kinds of lipid has been reported from the membranes, that is cholesterol, phospholipids, and galactolipids. But the membranes bilayer, as you can see in this diagram here, it is mainly made up of phospholipid. You can see this is the diagram of uh, membranes, and this is the lipid bilayer. You can see here this blue region is the head of the lipid bilayer, and this is the tail region. Each lipid is made up of head region and tail region. The head region is a hydrophilic and tail region is hydrophobic. Hydrophilic means water loving and hydrophobic means water hating. So, the hydrophilic region of any lipid is made up of philic portion is made up of the glycerol, and the hydrophobic region is mainly made up of cholesterol. As you can see in the diagram here, this is the tail region. It is made up of fatty acid, and this is the head region, which is made up of glycerol phosphate. So, as you know, the nature of glycerol phosphate is it is itself hydrophilic kind of, because certain hydroxyl groups are present, so it is hydrophilic in nature, while the fatty acids are the hydrophobic in nature. You must have studied in your chemistry classes that fatty acids are the hydrophobic, and the head and tail are usually designated as polar and non-polar. So the head region is hydrophilic as well as that is polar. Polar means it has two poles like water molecule. There are two poles in the water molecule, just like that in this head region there are two polar regions, and it is a polar molecule, and polar substances are mostly they are hydrophilic, while the hydrophobic region is a non-polar. There is no polarity and it is a water hitting kind. So, another component of the membranes is a protein, and there are basically two kinds of protein: peripheral protein or extrinsic protein, and integral protein or intrinsic protein. Peripheral means periphery. The protein which are present at the periphery of the membranes, they are peripheral protein, and they are also known as extrinsic. Extrinsic means outer portion. They are present at the outer surface of the membranes, and these proteins are very loosely bound. As you can see in the diagram here, this is the peripheral protein. It is present at the
periphery, and it can be very easily removed by increasing temperature or by using high salt solution. This kind of proteins can be easily removed from the membranes. For example, ATPase in mitochondria is a kind of extrinsic protein which can be easily removed, while the integral or intrinsic proteins are embedded in the lipid bilayer. As you can see here, this is a kind of integral protein or intrinsic. Integral means they are present inside, they are embedded inside membranes, and peripheral, they are present at the periphery. And the integral protein are embedded in the lipid bilayer by hydrophobic interactions, and they are very tightly bound and they cannot be easily removed like peripheral protein. So what kind of proteins are there in membranes? That is peripheral, and peripheral is also known as the extrinsic, and second one is the integral and also known as the intrinsic protein. The peripheral proteins are very loosely bound, while the intrinsic protein or integral proteins are very tightly bound to the membranes, and they cannot be easily removed. For example, ion channels certain receptors in the signal transduction pathway. And besides these two category of protein, there are other kind of proteins present in the membranes according to their function. For example, enzyme protein, carrier protein, and structural protein. As its name, enzyme protein means the protein which possesses catalytic activity. They are enzymatic protein. Carrier proteins are involved in the carrier process. They are involved in the transportation of substances. They help in transporting certain substances from one side of membranes to other side. So because they are playing role in the carrier, therefore they are known as a carrier protein. And structural proteins are involved in certain structure. They are involved in the structure of membranes, or they are involved in certain structure of any other organelles. That's why they are known as a structural protein. So on the basis of its location, whether it is present on periphery or it is present inside, it is of two kind, and depending upon its function, it is of three kind: enzyme protein, carrier protein, and structural protein. And third component of the membranes is a carbohydrate, which occur in the form of glycolipids and glycoproteins. Glyco word is used for the carbohydrates. So carbohydrate either occur with the lipid, or it occur with proteins. So like glycolipids means it has carbohydrate plus lipid, and glycoprotein means it has carbohydrate plus protein. And these kind of carbohydrates are mainly confined to the external membrane surfaces. So mainly a role of this kind of carbohydrates like glycolipids and glycoproteins are in the signal transduction. They sometimes act like receptor, and mostly they are involved in the signal transduction pathway. You know, the role of membranes is in the transmission of signal across the cell. They play role in the cell to cell communication, and here there is a role of carbohydrates like glycolipids and glycoprotein. They mostly acts as a receptor, or sometimes they act as a receptor for certain external substances present outside the cell. Now, what is the molecular structure of membranes? Under electron microscope, we can see that plasma membranes is 6 to 10 nanometer thick, and it has trilaminar structure. Trilaminar means it has three layer: two outer dense layer and one middle less dense layer. Electron dense layer means they look very dark under microscope, and they are mostly 2 nanometer in thickness, and middle one is a 3.5 nanometer thickness. So there are three layer, one two outer and one middle.
Outer one is 2 nanometer thick and middle one is approximately, not exactly, it may vary, but overall thickness of the membranes is 7.5 nanometer. And the different model has been proposed by different workers to describe the molecular structure of the membranes, like sandwich model, unit membranes model, and the fluid mosaic model. Sandwich model was given by Davson and Danieli, and according to this model, there is a bimolecular lipid layer. There is a two layer of lipid, as you can see here in the diagram. This is one lipid layer and this is the second lipid layer, and it is a bimolecular structure, means there are two layer of the lipid which remains sandwich between two protein layer. That's why it is known as a sandwich model. It is outer protein layer. There are two outer protein layer, and middle one is the lipid layer, and there is a two lipid layer, and this area is a hydrophobic. As I told you, the lipid has both hydrophobic and hydrophilic residues, and the hydrophobic residue is present inside, and hydrophilic zone is present outside. Now, the unit membranes model. The unit membranes model was proposed by David Robertson in 1959. According to this model, there are outer dense layer of protein, and just like a trilaminar model, as I explained you, there is a outer dense layer of protein, two outer dense layer of protein, and middle less dense layer of lipid. And there are certain small pores are present on the membranes which interrupt the continuity of the membranes, and this model is known as a unit membranes model. Unit membranes model, it is known as because they, besides plasma membranes, there are several membranes present around different cell organelles, like around mitochondria, around chloroplast, around Golgi body. Different there are different organelles which are surrounded by membranes. So mostly most of all of these biological membranes has similar composition. And now third model is the fluid mosaic model. This is the most accepted model, and it is it was given by Singer and Nicholson in the 1972. And according to this model, all biological membranes consist of double layer of lipid in which proteins are embedded in the mosaic manner. This is the diagram of membranes. You can see here there is a lipid bilayer. This is one layer of the lipid. This is the second second layer of lipid. And as I explained you, there are two category of protein: peripheral protein and the integral protein. You can see peripheral proteins are present at the periphery, and integral proteins are embedded in the membranes. So जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हर बायोलॉजिकल या किसी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में लिपिड की बाई लेयर होती है, मींस दो लेयर होती है लिपिड की, और उसमें प्रोटीन एम्बेडेड होती है मेम्ब्रेन्स के इनसाइड। जैसे कि ये आप प्रोटीन देख रहे हो, ब्लू कलर का है, ये इंटीग्रल प्रोटीन का एग्जाम्पल है। इंटीग्रल प्रोटीन वो होती है जो मेम्ब्रेन्स में एम्बेडेड होती है, मेम्ब्रेन्स के अंदर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से जुड़ी होती है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और इसे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन भी बोलते हैं। और जो पेरिफेरल प्रोटीन है, ये आप इधर देख सकते हो, ये पेरिफेरल प्रोटीन ये मोस्टली
हाइड्रोजन बॉन्डिंग या आयनिक इंटरेक्शन से जुड़ी होती है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बहुत तरीके की बॉन्डिंग होती है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग। बहुत तरीके के बॉन्डिंग है, जिसमें से कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, और जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है वहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे ये नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है, लाइक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होते हैं, वहां पे इतनी टाइट बाइंडिंग नहीं होती है। और यही कारण है कि ये जो मेम्ब्रेन्स है ये इसका फ्लूइड नेचर होता है। यहाँ पे ये इतने टाइटली बाउंड नहीं, बाउंड तो होते हैं बट दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी लिपिड मॉलिक्यूल में दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक होता है और एक हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक मींस वाटर hitting and water loving, sorry. Hydrophilic means water loving and hydrophobic means water हाइड्रोफोबिक इज वाटर हेटिंग एंड हाइड्रोफिलिक इज अ वाटर लविंग। तो लिपिड का मोस्टली नेचर क्या होता है कि ये वाटर से हिट करते हैं, इसलिए ये वाटर से बचने के लिए जो इनका हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है वो इसे अंदर की तरफ रखना चाहते हैं। जैसे आपने कभी भी देखा होगा, कभी भी ऑयल और वाटर इमल्सन आपने देखा है, जैसे अगर आप ऑयल को वाटर में डाल दें तो आप देख सकते हैं कि वहां पे ऑयल की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बन जाती है। ड्रॉपलेट्स एकदम स्फेयर बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बनाने का यही रीजन होता है कि वो मोस्टली ट्राई करते हैं कि वो वाटर से दूर रहें, और इसी इसी टेंडेंसी के कारण वो बिल्कुल सर्कल बना लेते हैं ताकि उनका कम से कम सरफेस एरिया वाटर से एक्सपोज हो। और यही लिपिड की टेंडेंसी यही हर जगह होती है। यहाँ जब मेम्ब्रेन्स में भी, यहाँ भी इनकी यही सेम टेंडेंसी होती है। ये अपने हाइड्रोफोबिक रेजिड्यू को अंदर करके बिल्कुल रखते हैं, और ये जो इनके हाइड्रोफोबिक रीजन है, ये इनका जो टेल रीजन है, एज यू कैन सी टेल रीजन, ये टेल रीजन एक दूसरे से हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग से इंटरेक्ट करके इधर बाइलेयर बनाते हैं। और इनका जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है ये बाहर की ओर होता है और ये प्रोटीन से इंटरेक्ट करता है। ये जो जितनी भी पेरिफेरल प्रोटीन होती हैं ये लिपिड बाइलेयर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्ट होती हैं। लेकिन जो ये इंटीग्रल प्रोटीन होती है, ये मेम्ब्रेन्स में ये भी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के कारण ही एम्बेडेड होती है, और ये थोड़ी टाइटली बाउंड होती है एज कंपेयर टू पेरिफेरल प्रोटीन। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट, कि इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ैक मॉडल क्यों कहते हैं। इसे फ्लूइड मोज़ैक मॉडल इसलिए कहते हैं, फ्लूइड का मतलब है कि ये इट इज नॉट सॉलिड, इट इज इन द फ्लूइड फॉर्म। फ्लूइड फॉर्म में होने का ये मतलब होता है कि इसके जो भी कंपोनेंट हैं वो एक जगह फिक्स नहीं होते हैं, दे कीप चेंजिंग देयर पोजीशन। इसमें जो भी लिपिड है या प्रोटीन है, इनका पोजीशन हमेशा चेंज होता रहता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ फ्लूइड। एंड व्हाई इट इज नोन एज अ मोज़ैक। मोज़ैक, जैसे आपने मोज़ैक स्ट्रक्चर जानते हो, मोज़ैक में डिफरेंट तरीके की चीजें जगह जगह रैंडमली एम्बेडेड होती हैं, उनका कोई एक डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है। तो यहाँ भी मोज़ैक में यहाँ होता है कि कोई भी प्रोटीन कभी एक सरफेस पे है तो कभी वो थोड़ी सी उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, और वो बिल्कुल मोज़ैक कोई एक फिक्स पोजीशन नहीं होती है कि कोई प्रोटीन है एक जगह पे तो वो दूसरी जगह पे भी होगी। दैट्स व्हाई इट इज नोन है। जैसा आपने कभी मोज़ैक फ्लोर देखा होगा, बट मोज़ैक फ्लोर में और इस फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में क्या डिफरेंस है कि वहाँ जो चीज जहाँ पड़ी है वही वो कलर वही फिक्स है, यहाँ पे फिक्स नहीं है। दिस मोज़ैक इज अ फ्लूइड काइंड, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। According to this model, there is a bilayer of a lipid, and this lipid bilayer is made by hydrophobic interaction between the tail residue of lipid molecule, and hydrophilic portion of the lipid is out as outer surface, and the peripheral proteins are embedded at the periphery. They are loosely connected to this bilayer, and integral proteins are embedded inside this
bilayer and they cannot be easily removed. Sometimes what happens, these certain proteins they span across the membranes. इस membranes के across span होने का मतलब क्या होता है कि वो एक तरफ से होकर के दूसरे तरफ तक पूरा helix बना के, like you can see alpha helix, as you can see here in the diagram, they make some certain helix kind of structure and they span the membranes. And as you can see, this is a carbohydrate, and this is carbohydrate is connected with the protein in the form of a glycoprotein. It is present at the periphery. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं इनका मोस्टली काम रिसेप्टर्स का होता है, तो ये मेम्ब्रेन्स के सरफेस पे ही पाए जाते हैं. एंड व्हाट अदर थिंग्स यू कैन सी, प्रोटीन चैनल्स आर हियर. ये चैनल ये सब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्क्राइब करती हूँ. सो आई थिंक यू मस्ट बी, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल होता है, सारे एग्जाम्स में हर जगह इसको पूछते हैं. सो यू मस्ट बी वेरी कॉन्शियस, यू शुड बी वेरी attentive for this model. And next thing is the diffusion of the membranes component, lateral and transverse diffusion. जैसा कि मैंने आपको बताया कि membranes के जो भी component होते हैं वो एक ही जगह fix नहीं होते हैं, they keep changing their पोजीशंस. तो कैसे उनका पोजीशन होता है, कैसे वो मूवमेंट होता है, तो दो तरीके के मूवमेंट होते हैं जैसे कि डिफ्यूजन बोलते हैं. ये इनका जो डिफ्यूजन होता है वो दो तरीके का होता है, एक लैटरल होता है और एक ट्रांसवर्स होता है. लैटरल एंड ट्रांसवर्स से आप समझ सकते हो कि लाइक लैटरली अगर ये अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये लिटिल डार्क पिंक कलर का है, ये हेड रीजन है लिपिड का, और ये यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे है, और मूवमेंट के बाद इसका पोजीशन थर्ड है. तो जरूरी नहीं है कि ये प्रोटीन ये कोई ये रेजिड्यू यहाँ प्रेजेंट है तो यही होगा. डिफ्यूजन के कारण इसका पोजीशन चेंज होता रहता है, और जो ये लैटरल डिफ्यूजन होता है ये इसका जो रेट होता है ये बहुत ही रैपिड होता है, बहुत फास्ट होता है. और एक दूसरा डिफ्यूजन का मेथड है ट्रांसवर्स डिफ्यूजन. ट्रांसवर्स डिफ्यूजन है कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स, यहाँ पे दो लेयर है मेम्ब्रेन्स के, जब एक लेयर मेम्ब्रेन से दूसरे लेयर की ओर ट्रांसफर हो. लेटरल डिफ्यूजन तो सेम ही मेम्ब्रेन्स में हो रहा है, जो एक मेम्ब्रेन्स की ये एक क्या है, मोनोलेयर, मोनो मीन्स सिंगल. जब विद इन मोनोलेयर मूवमेंट हो तो ऐसे मूवमेंट को लैटरल डिफ्यूजन कहते हैं. एंड व्हेन द मूवमेंट इज अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स, मतलब एक मोनोलेयर से दूसरे मोनोलेयर पे, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, अभी ये डार्क पिंक कलर का रेजिड्यू यहाँ है और ये डिफ्यूजन के बाद ये दूसरे लेयर में आ गया. तो ऐसे डिफ्यूजन को ट्रांसवर्स डिफ्यूजन बोलते हैं, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अ फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूजन. फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूजन बोलते हैं, बट इस डिफ्यूजन का रेट बहुत ही स्लो होता है. और ये डिफ्यूजन मोस्टली केवल लिपिड रेजिड्यू शो करते हैं, प्रोटीन रेजिड्यू बहुत ही रेयरली ऐसा डिफ्यूजन शो करते हैं. और इसका रीजन क्या है, प्रोटीन जो लिपिड है और लिपिड का जो इंटीरियर पोर्शन है, आप इसको देख सकते हैं, ये बिल्कुल हाइड्रोफोबिक है और ये कैसा है, बिल्कुल वाटर हिटिंग काइंड है. तो यहाँ पे कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो वाटर लविंग है वो कभी भी अंदर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जो मेम्ब्रेन्स का इंटीरियर कंपोनेंट है ये हाइड्रोफोबिक रेजिड्यू से बना है, एंड इट इज अ वाटर हिटिंग. सो एनी वाटर लविंग सब्सटेंस कैन नॉट इंटर inside membranes or cannot move across the membranes. कोई भी वाटर लविंग या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है वो कभी भी मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस मूवमेंट नहीं कर सकता है. मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस कौन मूवमेंट कर सकता है द सब्सटेंसेस हु आर लिपिड लविंग. हाइड्रोफोबिक जो जो होते हैं वो वाटर हिटिंग होते हैं और वो लिपिड लविंग होते हैं. तो जो लिपिड सॉल्युबल, लिपिड लविंग, और यू में से जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, जो फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस है, तो केवल फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस ही मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस मूवमेंट कर सकते हैं. कोई भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस कभी भी मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस मतलब खुद से मूवमेंट नहीं कर सकता है. उसको मैं अभी आगे डिस्क्राइब करूंगी कि ऐसे सब्सटेंसेस का मूवमेंट फिर कैसे पॉसिबल होता है. दैट्स व्हाई दिस मेम्ब्रेन्स इज नोन एज अ selectively permeable membranes, because it does not allow the transport or movement of every substance across the membranes. Only lipid soluble substances
substances can move across the membranes. Not water soluble, not charged substances. कोई भी charged particle भी membranes के across movement नहीं कर सकता है. Now, I think you must be clear about the lateral diffusion and the transfer diffusion. Lateral diffusion occur at a very fast rate, but transverse diffusion occurs at a very slow rate, and it can be enhanced only with the help of certain enzymes. कुछ enzymes होते हैं, जैसे एक enzyme flipase होता है जो कि इस diffusion process को बढ़ा देता है. So that is known as a transfer diffusion, or it is also known as a flip-flop diffusion. And next thing is the diffusion across the membranes. कैसे किसी भी substance का कैसे diffusion होता है across the membranes. As I told you, as you can see in this diagram, only fat soluble molecules can move across the membranes. But how it could be possible to move water soluble substances. Water soluble substances का फिर membranes के across movement कैसे possible होगा. तो just to assist water soluble substances across the membranes, there are certain channel proteins. कुछ ऐसी proteins होती हैं जो कि water soluble substances को movement में help करती हैं. As you can see in this diagram, this is a channel protein, and any water soluble substances can move across this channel. तो ये मेम्ब्रेन्स के हर पोर्शन से, हर सरफेस से इनका ट्रांसपोर्ट वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस का पॉसिबल नहीं है. ये केवल किसी स्पेसिफिक चैनल, एंड यू नो दिस चैनल आर वेरी स्पेसिफिक. ऐसा नहीं है कि ये अगर चैनल है तो इससे कोई भी मॉलिक्यूल एंटर कर जाएगा. ये किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक चैनल होता है मेम्ब्रेन्स. यू नो मेम्ब्रेन्स इज अ वेरी सेलेक्टिवली परमिएबल. इट डज नॉट allow every substance to move across the membranes. Now, what is active and passive transport? Active and passive. Active means the transport which requires energy. Such kind of transport is active. And passive means the transport which occurs itself. That is passive transport. So, ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन, अगर आपने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा होगा, व्हाट इज अ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस और मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस लाइक गैसेस और एनी सर्टेन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. नॉर्मली जो एक टेंडेंसी होती है, कोई भी मूवमेंट की टेंडेंसी होती है, वो मोस्टली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे, कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे वो वाटर हो या फिर कोई गैसेस सब्सटेंस हो, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर वो इजिली उनका ट्रांसपोर्ट होता है. इट अकर्स पैसिवली. बट अगर इसका ट्रांसपोर्ट जस्ट उल्टा होना हो, सपोज कि ये मेम्ब्रेन्स की दो साइड है और एक तरफ किसी भी आयन का या किसी भी मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और दूसरी तरफ उसका कंसंट्रेशन कम है, तो ज़्यादा से कम तो मूवमेंट खुद से हो जाएगा, पैसिवली हो जाएगा. बट अगर कम से ज़्यादा की ओर ट्रांसपोर्ट होना है तो फिर ट्रांसपोर्ट कैसे हो. ऐसे ट्रांसपोर्ट को असिस्ट करने के लिए देर आर सर्टेन एंजाइम्स which assist in the transport of certain these substances. Mostly there are certain pumps or this process require certain energy. इस ऐसे प्रोसेस को कुछ एनर्जी की जरूरत होती है, and this energy is normally provided in the form of a ATP, and the movement of any molecule or ion from high concentration to low concentration is known as the movement is known as the movement मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. अगर आपने केमिस्ट्री में कभी पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यही होता है कि इलेक्ट्रो कहीं भी किसी मॉलिक्यूल या आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और दूसरी तरफ कम है, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जो मूवमेंट होता है, इसे बोलते हैं डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. मतलब ये
खुद से होगा, इसे कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होना है, मतलब फ्रॉम लो टू हाई, देन इट विल रिक्वायर एनर्जी। नाउ जब सपोज किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होना है, लाइक फैट सॉल्युबल सब्सटेंस है, जैसे ये आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पे डिफ्यूजन से ये मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन्स के एक साइड से दूसरी साइड की तरफ आ रहा है। तो ये सिंपल डिफ्यूजन से आ रहा है, इससे किसी भी प्रकार के एंजाइम की या किसी भी प्रकार के कैरियर या पंप की किसी की जरूरत नहीं है। तो ये जो भी मॉलिक्यूल है, ये आई एम श्योर कि ये लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस खुद से नहीं आ सकता है मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस। इसे या तो किसी चैनल की जरूरत होगी या फिर किसी और तरीके से आएगा, बट ये खुद से मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो इट मस्ट बी अ फैट मॉलिक्यूल विच इज क्रॉसिंग द मेम्ब्रेन्स। एंड दिस इज, यू कैन सी, दिस इज अ चैनल प्रोटीन। अब ये चैनल प्रोटीन से इसलिए आ रहा है कि इट मस्ट बी वाटर सॉल्युबल। तो जितने भी वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है वो किसी चैनल से एंटर करेंगे। एंड दिस इज अ सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन इसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रॉम हाई टू लो हो रहा है। और ऐसे ट्रांसपोर्ट को पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, बिकॉज यहाँ किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं है। दिस इज अ चैनल, दिस इज अ कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन्स आर जस्ट लाइक एंजाइम। जैसे एंजाइम वर्क करता है कि सबस्ट्रेट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करता है, या सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है एंजाइम, ये कैरियर प्रोटीन भी बिल्कुल एंजाइम की तरह होता है। और ये किसी भी मॉलिक्यूल से बाइंड होकर के इसलिए मेम्ब्रेन्स के एक तरफ से दूसरे तरफ ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो ये कैरियर प्रोटीन है। तो कितने तरीके के ट्रांसपोर्ट आपने देख लिए, ये सिंपल डिफ्यूजन है, ये कैरियर असिस्टेड डिफ्यूजन है। तीसरा आप इस डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज अ पंप, और यहाँ पे एनर्जी की जरूरत है, और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है। ये तीनों डिफ्यूजन प्रोसेस आपने देखा, ये बिल्कुल डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, फ्रॉम हाई टू लो। लेकिन यहाँ पे लो टू हाई ट्रांसपोर्ट हो रहा है, देयरफॉर इट रिक्वायर्स एनर्जी। ये आप देख रहे हो डायग्राम में, यहाँ हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन ये शो कर रहा है। सो in this pump, the transport is happening with the help of energy is provided from ATP। और या इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बहुत और भी मीन्स होते हैं, जो कि एक बाद में मैं किसी लेक्चर में डिस्क्राइब करूंगी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफरेंट कैसे डिफरेंट तरीके से होते हैं। Now, what are the functions of the plasma membranes? As I described you, plasma membranes is a selectively permeable membranes, and it helps in the uptake and transport of substances from inside of the cell to outside, or sometimes from outside of the cell to inside. And it is very very selectively permeable. It does not allow every substances to enter or come outside the membranes. And it delimit the boundary of specific internal organelles। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेम्ब्रेन्स केवल एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे मेम्ब्रेन्सेस, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्सेस होते हैं, जैसे कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, और क्लोरोप्लास्ट है, ये सभी ही मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनेल्स हैं, सबके अराउंड मेम्ब्रेन्स होती है। और हर मेम्ब्रेन्स का वही कॉम्पोजिशन है, लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है, बट उसमें लिपिड या प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम ज़्यादा होगा, और उनका सेम ही कॉम्पोजिशन होता है, और वो सेम ही मॉडल है सबका, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग है कि उनका जो लिपिड और प्रोटीन है वो फ्लूइड और मोज़ेक है। फ्लूइड मोज़ेक जैसा आप जानते हो कि वो मोज़ेक फॉर्म में एम्बेडेड होते हैं, उनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती है, वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ
fluid mosaic model. And what is other function of the membranes? It plays role in the exocytosis and endocytosis. एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या हुआ? एक्सो बाहर, साइटोसिस, साइटोसिस मीन साइटोप्लाज्म के आउटसाइड मेम्ब्रेन्स, साइटोप्लाज्म के आउटसाइड मूवमेंट को एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं. सपोज किसी सब्सटेंस को सेल से बाहर की ओर निकालना हो, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस, अगर एंडो मीन्स अंदर की तरफ, साइटोसिस मीन्स अक्रॉस द साइटोप्लाज्म और अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स. अगर किसी भी मेम्ब्रेन्स सब्सटेंस को अंदर की तरफ अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स ले आना है, दिस प्रोसेस नोन एज एंडोसाइटोसिस. सो ये एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस में मेम्ब्रेन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. आई थिंक ये मेम्ब्रेन्स के थ्रू होता है. एंड इट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स. और सबसे इम्पोर्टेंट मेम्ब्रेन्स का रोल क्या है कि ये सेल टू सेल जो भी कम्युनिकेशन होता है, सिग्नलिंग होता है, ये सारे ही मेम्ब्रेन्स के थ्रू ही पॉसिबल होते हैं. या without membranes there will be no communication, there will be no signaling. So these things are possible only with the help of membranes. So what are the function of membranes? In the transport of substances, in the cell signaling, in the cell communication, it makes the boundary of different organelles, it plays role in the exocytosis and endocytosis. So I think you must be clear about every aspects of plasma membranes, biological membranes, and its ultrastructure, its composition, and its function. And for any query, any confusion, you can get back to me through my channel. Thank you so much.